सदर्न पंजाब के पहले बैट्समैन पसपा हुए, जिसके बाद सलमान अली आगा आए हैं। इस बैटिंग के महाज पर औसत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खासे कारआमद क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मैच में इन्होंने नई गेंद की थी सिंध के खिलाफ। अच्छी इनिंग्स सदर्न पंजाब को चाहिए है अपने नए कप्तान से, क्योंकि इस पिच में बहुत ज्यादा रन्स मौजूद हैं। पैड्स में लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। ज़ीशान और सलमान अली आगा पे अब काफ़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। ये वो विकेट है, आउटसाइड ऑफ स्टंप था। अमूमी तौर पे ये बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा दूर भी रह गए और एलिवेशन नहीं मिल पाई। थोड़ा अपराइट रह गए थे, जिसकी वजह से इनर सर्कल को नहीं क्लियर कर पाए। यहाँ जिस लेंथ को दोनों एंड्स पर इख्तियार किया बलूचिस्तान ने, आज ये उस हिकमत अमली का भी इनको फायदा हुआ है, क्योंकि पूरी तरह गेंद की तरफ गए नहीं थे शॉट खेलते हुए। क्योंकि जब आपके जहन पर सवार होता है बाउंसर, तो फिर आप कई बार दूर से ही खेल जाते हैं। ख़राब गेंदों को भी आप सही खेलने की, सही तरह से उड़ाने की पोजीशन में नहीं रहते। बिल्कुल, और थोड़ा सा ज़ीशान अशरफ और जैन दोनों का ये इशू ज़रूर है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप इनका पाँव नहीं जाता, बॉडी से दूर रह के सिर्फ हाथों की मदद से खेलना चाहते हैं शॉट्स। 4 फील्डर हैं ऑफ साइड में स्क्वायर के सामने, और कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद सीधी गई कवर्स के हाथों में। और काशिफ भट्टी ने ये आज की सुबह का बड़ा ही आसान कैच ले लिया। सलमान अली आगा स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर अब वापस जाएंगे। आकिफ जावेद ने ये दूसरी चोट पहुंचाई इस सदर्न को। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट था ये। कप्तान है सलमान अली आगा भी 2 गेंदों का सामना किया इन्होंने और उठा के मारना चाह रहे थे। आकिफ अच्छी लेंथ पे हिट करते हैं, जहां हल्का सा बाउंस भी मिलता है। कप्तान को वापस लौटना पड़ेगा। 0 पे 37 पे 2 सदर्न पंजाब। Suddenly in a spot of bother, Southern Punjab losing their captain for nothing after 5 overs. Brings in Sharoon Siraj on your screen at the moment, along with Zishan. Live from the Pindi Cricket Stadium, it's match 5. I just have a feeling that win the toss, bat first, might produce a different result. Ali Yunus alongside me. What we've seen in the power play in terms of bowling, we've seen some nice bounce, nip, carry. It's a good sign. More of a problem here for Southern Punjab is they're 2 down, and one, Sohaib Maqsood, is injured. He's gone back, so don't know how or what his condition is, but in all practicality, they're 3 down at the moment. Absolutely, and the blame is on the captain.
It was such a poor shot to play at this time. When you know that your premium batter is out, the responsibility is on you. You still play that sort of shot. Not cool. Oh, yes. On the second attempt, Shan Masood catches that one again in the air. A drive from Zishan, and Southern Punjab is going down south. The shot was on all right, but he played it in there. Went straight to the fielder. And Shan Masood, such a good fielder he is. In the second attempt, taking it easily. Yeah, smiles all round. You can smile now because he got it. Had he dropped it, it would have been different pictures. Another wicket going down for Southern Punjab. Zishan Asher this time, 12 of 9. It's 37 for 3. Moinuddin, the new batter in. Southern Punjab in a bit of bother at the moment. They've lost 3, or we can say 4, because Sohaib Maqsood, injured, has gone out. Still unable to understand or digest the approach these Southern batters have. They've decided to bat first on a very good pitch. And the type of shots we have seen, especially from the last 2 batters, it's pretty disappointing. 27 matches, 293 runs, 150. Best of 58 for Moinuddin. So now you have 2 batters who haven't faced a delivery yet. This is a fresh start now for the ATF Southern Punjab. 37 for 3 with 1 injured, make that almost 4. And here comes Ahmad Butt. Yeah. Good captaincy from Yasir Shah, keeping that attack, keeping that slip. Have a look at this catch from Shan. Yeah, just wobbled it. But thankfully it was Shan Masood. He's a very fit cricketer. Hold his nerves and took it easily in the end. Shan Masood, very fine cricketer. Excellent to see. Disappointment, yes, rightly so, because there was no point, there was no need of playing that shot. You already lost a wicket, the captain going down. This Balochistan side is a very huge side. You don't want to be giving them these chances because they're tactically very correct. Their coach Mushtaq Ahmed, the captain Yasir Shah. Just an amazing team, all those seniors in the side. If you give them such opportunities, they're not going to leave you. And we can see the result, 38 for 3. At a point we thought that they might get to a good start and get to a big total. Doesn't look the case here. Great fielding there, backward point. You all be on your toes once you've got the opposition on their knees. Youngster Abdul Wahid Bangalzai, have a look at that. This is what youngsters bring to the game, the energy. Such a boost for the remaining team, and a youngster feels like this, shows the confidence of the team. Wonderful to see. Lovely ball. What a ball. He's asking for it, but the umpire is not interested. Calls it the over. Power play done. 38 for 3. Oh, they all went up. They all went up. Disappointment. Haris Sohail there. The action replay would be very interesting to see because we couldn't tell from that angle. It happened all quickly.
That youngster Sharoon. Heavy slip में आना हाँ मिड विकेट जाओ उसको ना हाँ आप अंदर हो जाओ 40 इधर आएगा मिड विकेट आएगा आप पीछे चले जाओ शानी शानी मिड विकेट आ जा और ये इसको आप पीछे चले जाओ गुड लक शाजी गुड लक शाबाश के साथ इसको कर लो Saqib Khan signaling that's the end of the power play. As we see Yasir Shah, captain, bringing himself. Good time to bowl. There are two youngsters on crease. They've scored just one run. Sharoon hasn't scored yet. It will be a good time for him to settle in and put pressure on these youngsters. Have a look at the last delivery. There was a huge appeal. Oh, that came off the back leg maybe. Back thigh. The disappointment really definitely. They thought there was an edge. That's edged. Will earn a couple of runs. Let's have a look at that appeal of the last delivery of the previous over. What did it brush? Is it the spy pad or is it any part of that bat? We let Yasir Shah bowl his second delivery of the over. There's a deflection for sure. This would give us a better idea. Not this one. We'll look at it from the other angle. Well, we don't have the other angle, so apologize. It's such a huge opportunity on the other hand for these two youngsters. Well, Moinuddin not exactly a youngster, but Sharoon, yes. It's such a huge opportunity. They've come at a time and there are enough overs. Team needs them. If they can score for their team here, that will give them huge respect in the side. This youngster is rated really highly from Sahiwal. Sharoon looks very good. This is a good opportunity. You've got to play for the team. The team is in trouble. If you're able to score runs against a quality side, you definitely have something in you. Doing it with singles at the moment. That will do. Yasir Shah is an experienced operator. You don't want to be taking unnecessary risks to somebody like Yasir Shah. 3 down already. You can take a few overs to settle down and then maybe look to accelerate. 7 gone, 43 for 3. Southern Punjab. Now that's the first power play. Sohaib Maqsood started off nicely alongside Zain Abbas. It was a very good effort by Yasir Shah. They all looked good for a couple of shots, then gave it away at a time when they had a good start. This was the first one, Zain Abbas. And then this happened, probably the poorest of shots by the captain. And the very next ball, it was Zishan Nasher losing his wicket. 6 overs, 38 runs they scored after losing 3 wickets in the power play. And it's up to these two young players, Sharoon and Moinuddin, to take their teams out of this trouble, out of this dig they have put themselves in after winning the toss and batting first. As we see Kashif Bhatti coming into ball now. Shabash. Ek up. Bhatti. बहुत आला बट्टी गुड स्टार्ट शाबाश शाह बट्टी बॉय शाह बट्टी ठीक है बट्टी ठीक है बहुत आला बट्टी लेट्स बैक अप
डेरा ला बट्टी क्या बट्टी आजा वायर ब्रिलियंट बॉलिंग बट्टी बहुत आला A good start by Kashif Bhatti. excellent bowling catch it Oh, that's a good shot, but there is placement. There is a fielder placed there, just one run. At the moment, it's fine at the moment for these two young players. डेरा ला काशिफ भाई डेरा ला It's just a recovery, which I'm wondering at the moment. 3 down, 1 injured. catch it आजा आजा वायर आजा As it is in any format, it's tougher than T20, but you need a special effort to come back into the game and get that desired total, which बट्टी साहब Salman Ali Agha said, 170. बट्टी बहुत आला हो रहा है They'll have to rethink probably. At the toss, he said 170. Do you think they're on course to get to that? I highly doubt it. Well, like I said, you need someone in T20s. आउट हो गया You need 2 batsmen to score that big total. Just like we saw in the Asia Cup yesterday, you don't need the whole team. You can get there, but special efforts required. 8 gone, 47 for 3. Oh, that's not a good हाँ बट्टी very good batting card for Southern Bhatti. Punjab, losing 3 wickets, and Sohaib Maqsood retired hurt of 4, and now it's up to these two young players, Sharun Siraj and Moinuddin. Good captaincy by Yasir Shah. Is kept the slip in. And there's such a good combination. 2 leg spinners. Mushtaq Ahmed, the coach for Balochistan. That will definitely give confidence to somebody like Yasir Shah, because probably they both realize what they're thinking. शाजी एक कीपर आउट हो गया कीपर बहुत आला वाहिद कंडन वाहिदा हाँ मुझे लगा ऐसे He's leading the side pretty well. It's always so imperative and important that if you're not really doing well with the ball, he's doing good in this match, but your leadership skills count. You contribute in many ways. The way he used the bowlers in the first game, and today how he's operated them, it's good. It's also so important that you say at the toss that I also wanted to win the toss and bat first, but you didn't get that, no problem. You focus on your plan B. What do we do? Bowling first. Good form. This man is in. Got a 50, number 4. Oh, he's got him. The wrong one. I don't know what was that all about. Moinuddin comes down the wicket and then doesn't offer a shot. That's not a good idea against somebody like Yasir Shah. He's too experienced for that. Another wicket going down. Have a look at that. Down the track he came. That was a straighter one, a flipper maybe. Pulled up a little, got the wicket. That's what I was saying against youngsters. Yasir Shah, he will be very dangerous. Moinuddin, bowled by Yasir Shah, just scored 7 runs. Southern Punjab 48 for 4.
Imran Randhawa walks out and in a big heap of trouble with 80 of Southern Punjab, 48 for 4. Just a bunch of loose shots or nothing shots. Oi! They're not learning. Definitely. In the first game, they won the toss, batted first. It was a similar sort of situation. And when you play shots like this, when you do a bowler like Yasir Shah, you're bound to have that scorecard. 49 for 4 at the moment. He didn't play a shot. I wouldn't even call it a loose shot. It's just no shot offered. We'll come back to that. It's the end of the over. 9 gone, 49 for 4. कैश हो रहा है, यहाँ से हो रहा है. Fielding coach Irfan Fazil making a bit of work with Hassan Khan there. Mohammad Shahzad also there on the bench from DG Khan, a very talented youngster. Hey, well bowled, well bowled. Aja, aja, keeper. Yeah, just about the approach I was talking about. Probably he got double-minded. He wanted to come down the track and play towards onside maybe. Yeah, he was positioning himself to play inside out over extra cover and suddenly realized that I have not read the ball is coming in. So then you close the face of your bat halfway through. Got a big gate between your body and the bat. When you're charging, it becomes very difficult to abort your shot or the mindset that you've come out of the crease with. In that order, you need to cover the line of the ball. Then you don't worry if it hits your legs because you're so far down, you won't be given leg before. Yeah, also, you have to time it, how late you get out of your crease. Probably to somebody like Yasir Shah, it was too early for that. He's placed himself at short extra cover, looking to attack Yasir Shah. आजा 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 खुर्रम आउट हो गया खुर्रम आउट हो गया ठीक है बॉयज क्या बात है लवली बॉयज बहुत आला काशिफ भाई बहुत आला 50 up 52 for 4 now 80 of Southern Punjab excellent cash still don't see Sohaib Maqsood anywhere not really sure where he is come on cash come on क्या बात है भाई क्या बात है End of 10 overs, 52 for 4 Southern Punjab. शाबाश शाबाश अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए चले गए और अपनी विकेट गंवा बैठे यासिर शाह ने एक और कामयाबी हासिल की स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे और सार ऑफ स्टंप की तरफ गिर गया था ये नीचे भी रही और इस तरह विकेटें जो हैं सस्ते में निमट रही हैं 52 रन पर ये 5वीं विकेट गिरी इमरान रंधावा आउट होने वाले खिलाड़ी हैं सदर्न पंजाब की टीम खुद ही कसूरवार है सूरत हाल की
टॉप ऑर्डर बैटर्स बिल्कुल हजार रसीदा पत्तों की तरह झड़ गई, कोई ज़्यादा बॉलिंग में काट नहीं थी, सॉफ्ट डिसमिसल्स ऊपर तले देखने को मिले। ये भी एक ख़राब शॉट था, बिल्कुल सीधी गेंद थी यासिर की, टर्न के लिए खेले, ज़्यादा टर्न देखी नहीं गई इस पिच पर। इमरान रंधावा फ्रंट पैड बिल्कुल विकेटों के सामने था। सदर्न पंजाब की टीम किस प्लानिंग और किस हिकमत अमली के साथ इस मैच में आई है, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेल गए सीधी बॉल को, और कोई मुश्किल पेश नहीं आई अंपायर के लिए। यासिर शाह की खुसूसियत है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और इस विकेट पे उन्हें थोड़ा सा बॉल हिट करने का मौका मिला, और स्टंप्स की लाइन में बॉल करने का उन्होंने फ़ायदा उठाया। 6 की 6 टीमें इस टूर्नामेंट में हम देख चुके हैं तारिक, और सदर्न पंजाब की टीम लगता है कि बैटिंग के हवाले से कम सबसे कमज़ोर यूनिट दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और पिछले मैच में ये टीम अपने पूरे 20 ओवर्स नहीं खेल सकी थी, और आज भी लगता है कि मुश्किल पेश आएगी। यहाँ से बहुत ही गैर मामूली खेलना होगा सोहेब मकसूद को, जो आज फास्ट बॉलर्स का सामना नहीं कर सके थे, और स्पिनर्स आए हैं तो उनकी आमद हो गई है मैदान में। ठीक है। शारून से अच्छी बैटिंग की तवक्को की जा सकती है। जी हाँ, और शारून ही जो है वो शाइनिंग स्टार थे, पिछले मैच में भी अच्छे रन बनाए थे, लेकिन टीम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और नौजवान को जिम्मेदारी दे दी गई है। अहलियत रखते हैं शारून सिराज, अच्छी टेक्निक है और फुटवर्क का इस्तेमाल करना जानते हैं स्पिनर के खिलाफ। ये सोहेब मकसूद आज जब जख्मी हुए थे, बाउंसर्स के साथ उनका इस्तकबाल किया खुर्रम ने, और एक हलचल उन्होंने मचा दी सदर्न पंजाब के खेमे में। ये दरअसल एक स्टेटमेंट थी बॉलिंग अटैक की जानिब से कि आसानी कि आपको रन्स बनाने नहीं दिए जाएंगे। सुबह में जब बात हो रही थी बलोचिस्तान के कोच मुश्ताक अहमद से, वो इस बात की अहमियत को ज़रूर जतला रहे थे कि बाउंसर्स इस फॉर्मेट में इम्पोर्टेंट होते हैं। वेरी वेल बोल्ड। जब बैटर्स को वो खदशा नहीं होता तो उमूमन वो फ्रंट फुट पर पहले से आ जाते हैं, और आगे गिरी हुई गेंद और इवन हार्ड लेंथ को भी ऑन दी आप मार सकते हैं। तो एक ही तरीका है उनको पीछे रखने का, और अच्छा इस्तेमाल किया आज शॉर्ट पिच डिलीवरी का, खासतौर पर खुर्रम शहजाद ने। और इससे जो अच्छी पिच है वो भी नहीं हो सकती बाउंसर्स करने के लिए। बड़ा शानदार ओवर जिसकी इब्तिदा विकेट से हुई। यासिर शाह नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं 57 पे 5। आकिफ और खुर्रम शहजाद जो कल के दिन खास से महंगे रहे थे, आज उन्होंने मुतासिर किया अपनी रफ्तार से, इब्तिदा में परेशान किया सदर्न पंजाब के टॉप ऑर्डर को। बाद बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है अम्बाद भट्ट और दोनों स्पिनर्स ने पेसर्स को। अब क्या सुहेब को देखते हुए फास्ट बॉलर को वापस बुला लिया गया है। उनके सबसे बड़े बदखां हैं खुर्रम शहजाद, उनको ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है, और जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि मुश्ताक अहमद एग्रेसिव इंटेंट के साथ कोयटा बलूचिस्तान की इस टीम को कोच कर रहे हैं, और जिस तरह की वो खुद भी क्रिकेटर भी रहे हैं और कोचिंग में भी वो हमेशा एग्रेशन पे बिलीव करते हैं। उससे मकसूद को हेलमेट पहनना पड़ेगा, और ये एक अच्छा मुकाबला होने को है। देखते हैं कि सोहेब मकसूद जिनकी स्ट्रेंथ है वो ऑन दी आप बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को। अब क्या इतनी बेखौफी के साथ आगे आएंगे या वो बाउंसर का इंतज़ार करेंगे? पिच का भी आपने जिक्र किया,
अच्छी पिच है, अच्छी मुकाबले वाली पिच है जिसमें सबके लिए सब कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। यहाँ डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को ला खड़ा किया है, एक फील्डर स्कोर के सामने भी है बाउंड्री लाइन पर हुसैन तलत। देखना ये कि क्या ये इनको ब्लफ करने तो नहीं जाएंगे। तवक्को कर रहे थे इसी गेंद की सुहेब, इसलिए तैयार थे, फिर भी सरप्राइज हुए थोड़ा पेस से। क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं कि खुर्रम शहजाद हैवी बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल स्प्लाइस के ऊपर जाके लगा ये बॉल और वाजे कर दिया खुर्रम ने कि वो सुहेब के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यासिर शाह बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, विकेट लेने के मुतालिक सोच रहे हैं। दोनों ही मैचों में हमने यही देखा है, विकेट लेने की कोशिश की उनके बॉलर्स ने। ज़्यादा अच्छी गेंद नहीं थी लेकिन रन एक ही मिल सकेगा। बहुत आला असद भाई, बहुत आला। और फील्डिंग जो है वो भी इनकी बराबर की जिम्मेदार है। साधन पंजाब को दीवार से जहां तक लगाने का ताल्लुक है, विकेट कीपर हसीबुल्लाह नौजवान है, बिस्मिल्लाह खान की जगह पर इनको मौका मिला है कि टीम में एनर्जी लाने का एक सबब बने। पॉइंट पोजीशन पर आमतौर पर बंगल से ही फील्डिंग करते हैं। बहुत अरसा हो गया, 7 ओवर से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है वो बाउंड्री आए हुए। और इनसाइड एज, क्या यही एक तरीका रह गया था जिस पर बाउंड्री मिल सकती थी सदर्न पंजाब को, और इस बंद गली से बाहर निकलने का ये मौका आखिरकार मैसर आया। कुछ नसीबी शारून की। कोई कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था। खुर्रम शहजाद ने अच्छी लाइन पे शॉर्ट पिच बॉलिंग की है जिसका उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिला है और बैट्समैन को उन्होंने बैकफुट पर रहने पर मजबूर किया। बाउंड्री ज़रूर आई लेकिन खुर्रम का हौसला पस्त नहीं हुआ होगा इस लेंथ और इस लाइन पे बॉल करने से। डबल फिगर में पहुंच गए हैं शारून। बाउंसर की लाइन से आगे चले गए। साहिवाल इनका शहर है, शारून सिराज का। पिछले सीजन में इनको पहली बार देखा गया था, टूर्नामेंट के बैक एंड पर मौका मिला था। इनके साथ एक और बैट्समैन भी खेले थे, यूसुफ बाबर। दोनों ने खासा मुतासिर किया था। यूसुफ बाबर इस वक्त सेकंड 11 का हिस्सा हैं। शारून पहले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली, अपनी टीम का स्कोर जो है वो ट्रिपल फिगर में ले जाने में कामयाब हुए। स्पिनर्स को छक्के भी लगाए थे। गेंद खासी बाहर निकल गई, एम्पायर को वाइड की तरफ आना पड़ा। एक सवाल है शाह फैसल, सदर्न पंजाब की शोहरत रही है बड़े बड़े नामवर फास्ट बॉलर पैदा करने की। वकार यूनुस उसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। उसके बाद मोहम्मद जाहिद आए थे, उन्होंने भी तहलका सा मचा दिया था। यहीं रावलपिंडी में उन्होंने 11 विकेटें ली थी अपने अव्वलीन टेस्ट मैच में। पाकिस्तान का वो आज भी रिकॉर्ड है। टेस्ट डेब्यू पर मोहम्मद इरफान आए, राव इफ्तिखार अंजुम आए थे और भी कई नाम उभर कर आते रहे हैं फास्ट बॉलिंग के जिम्न में। लेकिन ये गेंद निकल जाएगी, विकेट कीपर की पहुंच से खासी दूर थी और अंपायर पर नजर रखना होगी। ये बल्ले से डिफ्लेक्ट होकर आई थी। इस ओवर में 2 चौके मिल गए विकेटों के पीछे शारून को। ये अच्छा स्ट्रोक था लेकिन ख़राब लाइन थी। खुर्रम शहजाद पिछली तीनों गेंदों में लेग साइड की जानिब स्ट्रे करते हुए, एक खुशकिस्मती रही जब वाइड कंसीड नहीं की। इस मरतबा तो बहुत आगे गिरी हुई गेंद थी, आसान मौका था शारून के लिए बाउंड्री हासिल करने का और 4 रन हासिल किए। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं जिसका जवाब अगले ओवर में हम आपसे चाहेंगे कि इतने नामवर फास्ट बॉलर्स तो आते रहे हैं इस इलाके से, लेकिन इंजमाम के अलावा कोई नामवर बैट्समैन हमने नहीं देखा है सदर्न पंजाब से। क्या मुमकिन वजह हो सकती है? अच्छा इख्तिताम किया खुर्रम शहजाद ने इस ओवर का। 67 5 खिलाड़ियों।
12 ओवर्स के बाद 67 पर 5। शाबाश, इधर हो जा, थोड़ा बाहर रहना। जनूबी पंजाब के आपने बात की, फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री रही है। रिस्ट स्पिन में मुश्ताक अहमद भी थे। बैटर्स में इंतजाम के अलावा अगर इलाही ब्रदर्स की बात की जाए तो कुछ नाम उन्होंने ज़रूर बनाया, पाकिस्तान के लिए खेले। डोमेस्टिक लेवल पर तो खैर वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं। और आमिर बशीर का जिक्र करना होगा जो बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं खेल पाए। लेकिन आपने बात सही की कि जो फास्ट बॉलिंग की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा रिच है इस इलाके की। माशाल्लाह, हो रहा है, शाबाश। फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक ही रन बनेगा सुहेब के लिए। जिस्मानी साख्त के लिहाज से फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा मौजू हैं उस इलाके के लोग, और इंजमाम की भी हैसियत से आपको लगता है कि वो शायद फास्ट बॉलर ही हैं, लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि बैटिंग में कितना नाम बनाया उन्होंने। यहाँ ये देखिए डिसीव हो गए थे फ्लाइट में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अल्लाह कैश, बहुत अल्लाह कैश। शारून का उनके टेम्परामेंट की भी यहाँ पर आजमाइश है। अभी 8 ओवर्स रहते हैं। आजा आजा इसमें, और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि एक्सीलेंट कैश, एक्सीलेंट 20 ओवर्स कैश। अब खेलने के लिए जाएं, क्योंकि यही आखिरी पार्टनरशिप है, यही आखिरी उम्मीद हो सकती है। अब इमरान रंधावा के आउट होने के बाद इसके बाद कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। इसे उठाकर खेला, ये पसंदीदा शॉट है शारून का, और गेंद सर बसर गई पार एंड पर, बाउंड्री के बाहर। लाजवाब शॉट। इतना अच्छा फुटवर्क, और फुटवर्क ने ही इस शॉट को मुमकिन बनाया। फ्लाइट डिलीवरी थी, फ्लाइट को अच्छा चेक किया और कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल पिच तक जा पहुंचे। सर बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर से महफूज तरीन स्ट्रोक। जाहिर जिसामत में इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो शॉट में उनकी जो ताकत थी टाइमिंग के ज़रिए वो काफ़ी लाजवाब थी। किंगडम वैली नेशनल T20 कप में आज हम तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं और पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है। गेंद लगता है खो गई है मीडिया सेंटर एंड पर। जो कैमरामैन ने उनकी मदद ली जाएगी उसको वापस लाने में। आप शारून की टेम्परामेंट की बात कर रहे थे किसी भी यंगस्टर के लिए, और दोबारा देखिए बहुत ही लाजवाब था। हेड पोजीशन भी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ताकत लगाया, जिस तरह के बॉल ने कैरी किया, डिस्टेंस हासिल किया। अच्छी निशानी है किसी भी नौजवान के लिए कि स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अभी बिल्कुल सीज़न का आगाज़ है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल पंजाब की टीम जो है इस टूर्नामेंट की कमज़ोर तरीन बैटिंग लाइनअप महसूस हो रही है, लेकिन यहीं पर एक नौजवानों के लिए मौका भी है। शारून के लिए मौका है। पहले मैच में उन्होंने 30 के करीब रन बनाए, टॉप स्कोरर थे, और अब यहाँ से उनको, जैसे तारिक ने कहा, अगर अपनी टीम को कैरी करें, 20 ओवर पूरे खेलें, तो ना सिर्फ वो टीम के लिए अच्छा करेंगे बल्कि अपने लिए भी अच्छा करेंगे, और इसी तरह उनका नाम बनेगा। एक उम्मीद उनसे हो चली थी पिछले साल, जिस तरह उनका इंट्रोडक्शन हुआ था डोमेस्टिक सीन पर। ये मौके उनको मिलते रहेंगे अपने आप को और अपने कैरियर को आगे ले जाने के लिए, और आज भी एक बेहतरीन मौका है। स्टेज बिल्कुल सेट है उनके लिए। अब नई गेंद मुतबादल गेंद मंगवा ली है। आशिर रियाज आए थे फील्ड अंपायर्स की मदद के लिए। यासिर शाह क्या एक एंड पर फास्ट बॉलर वो कंटिन्यू करेंगे शारून और सुहेब के खिलाफ, क्योंकि स्पिनर्स को ये दोनों जो है ये धज्जियां उड़ा सकते हैं। इनमें जो हिटिंग एबिलिटी है दोनों की, इसमें कोई शुबा नहीं है।
अच्छा खेला इस बार, बैकफुट से 1 रन के लिए मजबूर किया था बॉलर को, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर शॉट खेला। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे शारून 75 5 विकेट पे। ये आज ये विकेटें गिरी, सबसे पहले पसपा हुए जैन अब्बास, और ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना शॉट था जो कि किसी कप्तान को जेब नहीं देता। सलमान अली आगा ने खेला, इस बार ईशान अशरफ आउट हुए और मोइनुद्दीन, एक बड़ा आसान सा डिसमिसल था। एक और विकेट यासिर शाह ने ली, मोहम्मद इमरान रंधावा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। साउदर्न पंजाब की टीम जो है वेरी वेल बोल्ड यार, वेरी वेल बोल्ड। हम नौजवान शारून की बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी जो पाकिस्तान जूनियर लीग है इसकी भी बात होनी चाहिए। यहाँ वहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को जो अगले महीने मौका मिलने वाला है अपनी सलाहियतों के इजहार का। ये अच्छा शॉट खेला, कवर के फील्डर इससे जा लेंगे। 18 ममालिक के 140 क्रिकेटर्स के नाम अभी तक सामने आए हैं पीजीएल में, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तस्वुर है पीजीएल का, ये इसको पजीराई मिली है दुनिया भर में। 140 कम सिन क्रिकेटर्स का जो उनकी जो दिलचस्पी सामने आई है, तो हम कह सकते हैं कि इस ख्याल या इस तस्वुर का एतराफ़ कर लिया गया है दुनिया भर में। ये पाकिस्तान मुख्तलिफ इस तरह के आइडियाज़ लाता रहा है क्रिकेट की दुनिया में, इससे पहले भी। बिल्कुल, और उसका हैशटैग है नेक्स्ट 11। और शाहीन, बाबर, इमाम, इस तरह के कई नौजवान सामने आएंगे इस लीग से। आजा आजा आकिफ, आजा आकिफ। मेरे लिए सबसे दिलचस्पी का बायस ये है कि जावेद मियांदाद जो हैं पाकिस्तान के अजीम बैट्समैन, वो 10 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट से दोबारा वाबस्ता हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कम सिन क्रिकेटर्स के साथ मौका होगा कम सिन क्रिकेटर्स के पास जावेद मियांदाद से कुछ सीखने का, क्योंकि एक कसक सी रही है दिल में, जिस तरह अब्दुल कादिर जो है शायद पाकिस्तान क्रिकेट ने उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया उनकी सलाहियतों से। और जावेद मियांदाद वो बैटिंग के सबसे बड़े गुरु हैं इस इलाके में, इस दुनिया में। तो ये देर आए दुरुस्त आए जावेद मियांदाद की वाबस्तगी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट से। बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा नहीं। दुनिया के न सिर्फ अपने इरा के बल्कि तमाम इराज के जो बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स आए हैं, उसमें बिलाशुबा जावेद मियांदाद का ज़रूर नाम आता है। आप सोचें कि आप एक 18-19 साल के नौजवान हो। इसे उठाकर खेला फील्डर, जी हाँ, आ गया गेंद के नीचे। गेंद जहां जहां शान मसूद वहां एक और कैच ले गए। तीसरा कैच आज के दिन का ये शान ने शान से लिया और सुहेब मकसूद ने वापसी की राह ली। साउदर्न पंजाब की बैटिंग मुसलसल पसपा होती जा रही है। दूसरी मर्तबा वापसी हुई है सुहेब मकसूद की, और आज के दिन आखिरी मर्तबा बिल्कुल अपने शॉट से खुश नहीं थे। यासिर शाह ने अच्छा फ्लाइट से अटेम्प्ट किया उन्हें, और फ्लाइट में बीट हो गए, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एटीएफ सदर्न पंजाब की इनिंग्स पूरी तरह लड़खड़ाते हुए उनकी मरकजी उम्मीद सुहेब मकसूद भी वापस हुए 12 रन बनाकर 14 के बाद 80 पर 6।
मोहम्मद इलियास को आज फिर मैदान में जल्दी आना पड़ा। 80 रन पर 6 विकेटें गिर गई हैं। तो मकसूद उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। यासिर शाह यकीनी तौर पर आज उनकी बॉलिंग का बोलबाला हो गया है। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। आशिफ भट्टी ने ज़्यादा रन्स नहीं दिए हैं, तो दोनों स्पिनर्स जो हैं वो खुश होंगे, और तीसरे भी मुश्ताक अहमद भी। बिल्कुल, लेकिन ये 80 पे 6 वाली विकेट बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सदर्न पंजाब की टीम के पास, इस तरह उन्होंने विकेटें अपनी गंवाई हैं। टीएफ सदर्न पंजाब को टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों के बाद बहुत ज़्यादा मिल बैठकर कोई नई हिकमत अमली बनानी होगी। छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन उतनी ज़्यादा एलिवेशन पा नहीं सके। सीधा हाथों में इस गेंद को दे मारा। पूरी तरह फिट नजर नहीं आ रहे थे। ये अच्छा स्वीप शॉट, इस बार गेंद को पैडल करने में कामयाब हुए। बहुत ज्यादा फाइन, और 4 रन बन गए। शारून स्पिनर्स पर मुसलसल तीसरे दिन भी अपनी महारत दिखा रहे हैं। ज्यादा परवाह नहीं कर पा रहे दूसरे एंड पर विकेटें गिरने के बावजूद। ये अच्छा पिक किया उन्होंने गैप को, और थोड़ा सा प्रीमेडिटेटेड जरूर था, लेकिन एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी थी। अच्छी वर्सेटिलिटी दिखा रहे हैं स्पिन के खिलाफ, कदमों का इस्तेमाल किया, स्वीप शॉट भी दिखाया, और बैकफुट पे भी अच्छी महारत दिखा रहे हैं। काफ़ी मुतासिर कुन इनिंग्स है, काफ़ी मुश्किल हालात में। सदर्न पंजाब ने अपना सबसे कम स्कोर बनाया था पिछले मैच में सिंध के खिलाफ 105 रन पर वो ऑल आउट हुए। आज अभी वो अपने उस रिकॉर्ड को बेहतर करने की पोजीशन में अभी भी हैं। अभी भी उससे आगे जाने के लिए इन्हें 20 रन बनाना होंगे, बल्कि 21 रन। यकीनन मुख्तलिफ सोच रहे होंगे इससे। अगर वापस आऊँ मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, जो विकेट गिरने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान जूनियर लीग की। एक 18-19 साल के नौजवान को जावेद मियांदाद जैसे दिमाग के साथ काम करने का मौका मिले अपने करियर में सो अर्ली, और ना सिर्फ जावेद मियांदाद, अजीम विवियन रिचर्ड भी मेंटोर हैं गवादर के, वो भी होंगे। वर्ल्ड T20 2 दफ़ा जीतने वाले कप्तान डैरेन सैमी भी। और अहम बात यह है कि आईसीसी ने अब ये फैसला किया है कि अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप भी कराया जाएगा। उस एतबार से भी ये जो PGL है इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है T20 का, उसकी बेहतरीन तैयारी का मौका मिलेगा इन टीनेज क्रिकेटर्स को। उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। ये अच्छी आई है बल्ले पर, और ये बहुत दूर चली है, मीलों दूर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब। जावेद अख्तर इनक्लोजर से इसे वापस लाना होगा। इलियास ने आड़े हाथों लिया काशिफ भट्टी को, जिनके 3 ओवर में सिर्फ 15 रन आए थे। ये बहुत ही जोरदार स्ट्रोक था, बिल्कुल स्टैंड्स के बीचों बीच जाकर गिरा। तकरीबन 80 मीटर की ये हिट होगी, और सदर्न पंजाब को इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन उनकी इनिंग्स लड़खड़ाते हुए ऐसी कई मजीद हिट्स उनको चाहिए होंगी। 15 के बाद 93 पे 6।
Well, I don't know where to start with the ATF Southern Punjab. If you look at the score, number of wickets down, it's just totally messed up. The toss that they won, they wanted to bat first, but it just looked very underprepared, and seems like things have just not worked out for them. Some shots that they've opted to play. There's a sense of urgency or hurry in their batting. They've just been awarding wickets, and now it's just left down to Sharoon Siraj, one of the recognized batters, to take this somewhere which can be defendable for the bowlers to come. I don't take it away, Marina, from the way Yasir has led the side. Second again, direct hit would be trouble. I'm pretty sure if Yasir hit the stumps directly, there would have been wicket number 7. It was a very close call. You have to give credit, not to just Yasir Shah. Would have been Shah once again in the action. Would have been another one down. He has led the team really well, as you said, tightening the noose around them. Operated his bowlers well. Take some fielding. Oh, he missed that. That's not really what you associate with this team. Rolled over the boundary. Abdul Wahid Bangalzai down there. A freebie given, could have been only a couple. He's just dived over the ball, just like that. When you summarize ATF Southern Punjab, I think they had that target in mind of 180, but once things are not going your way, you have to re-evaluate. We keep on saying this. It looked like they never had a plan how to reach that 180, or if not, anything around probably 150, 160. Just went on trying to break the shackles, forcing shots against the line, against the swing. They were all over the place. I apologize to Bangalzai. That was Khurram Shahzad with a misfield. Left hand side back. Middle. Got a stranglehold, Balochistan, over ATF Southern Punjab. 100 up with 6 wickets down. From here on, with the remaining 4 overs after this, whatever they add is a bonus. Because we know how good these pitches are when you talk about batting. You apply yourself, and that's a good boundary. You see, it just gives you evidence of that. Waited for it, Elias, and then swung his bat. Runs are available. It's a good surface. Balochistan bowlers will give you some looseness every now and then. Lapsing his and managed to punch it out into the leg side. The only problem is have a resolute plan. There were no partnerships. There was no plan whatsoever how to reach certain total, how to build these partnerships. These are some valuable rounds that Elias and Sharoon now are scoring. He'll probably invite Elias to go for that big shot. Yeah, ball full. Let him hit big. He's got the long on, long off push back. You'd expect that from tailenders, fast bowlers. They want to show their authority with the bat as well. 16 gone, 105 for 6. ATF Southern Punjab, not much to talk about. Maqsood went out, Pride Hurt came back.
Ben Abbas and Zishan Ashraf. For a moment, it looked like they've got their form back, but again, no problem. Salman Ali Agha, I think that was a very irresponsible shot. Captain, 3 for 17. And it works. You can then command and demand things from your players. 2 for 15 for Akif Javed. 1 for 20 for Ahmad Butt. They've just been all over ATF Southern Punjab's batters and their decision to bat first. Akif will now continue from our end, which is the commentary box end. It's good to see him back. I still remember it was the same ground where he injured himself. He came back strong, took part in the PSL. He's now decided to come round the wicket. Young, talented fast bowler. No ball and a boundary as well. You don't want to give those freebies when you've got them in a stranglehold, as I said, then why? So not only you've given 5 runs already, now it's a free hit. ATF Southern Punjab will take it. They need runs, doesn't matter how they come. Overstepping around the wicket. Oh, that's a big one. Really big one. That should be 2 free hits. The big no ball. Now he's having a word with him, just probably telling him where to bowl, because there cannot be any field change, because the batsman is the same. High on the bat, just be a single. He's been very smart about his bowling, Akif Javed. He's learned over the time. Got some good lengths to hit. And giving no room on this occasion as well. Hitting the deck hard. Made sure it wasn't outside off stump where he can get any room to maneuver. Too much shuffling going on. Third man push back. Mid-off comes in the circle. He's going to go for runs. You can't bowl that line. Just not required. Yeah, these are lucky runs for ATF Southern Punjab. It's been superb so far, Balochistan, in terms of field placement, bowling. This time just helping on its way, Sharoon. Don't mind the angle, but again you have to finish within the stumps. Good pace, trying to pitch it short, make sure you've got the field right for it. Just 2 deliveries in the over, already 10 given. 5 no balls, a single and then a boundary. Akif will have to pull up his socks now. In the air, well, just for a moment I thought that it would be Hussain Talat that mid-off had an opportunity. Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can go and visit their official Facebook page. Get more information and chance to win exciting prizes. And be the next winner. Make sure of it. Big shot and a big over. This is some very ordinary bowling here from Akif Javed. He's gone for 17 in the first 4 balls of the over. They're going to bounce on anything where they find an opportunity to score runs. With an older ball, this length in death overs has never worked. Ilyas deep in his crease, he can hit big for sure. Have a look at that again, just the transfer of weight. It's on the back foot. That's why he managed to create that leverage. Hit it straight. Travelled.
Yeah, the short ball with such a length, it just sits nice and pretty in front of you. And someone like Ilyas, he's ready to swing at everything. He's standing deep in the crease. I think something in the stumps make him worry about losing his wicket. Like that. Still one ball to go in this over. That's a good comeback from Akif Javed. Changed the thing right into the block hole. That's where you should be looking to bowl every ball. They're going to swing hard. That's what's required of them. Anything around the length area, short, outside off stump, will travel to the boundary. Oh, it's a wide. For a moment I thought he'll get away with it. This is a long over. 18 already with 5 no balls, a wide, a 6, a boundary, 3 singles. This is almost an innings on its own. Balochistan might have to think about how they want to operate in that over, especially Akif. He needs to learn that art. Pretty decent with the new ball. And he hasn't learned a thing. It's just going to go for runs and runs. This is a massive over. 23 of it. Now ATF Southern Punjab score looks better. 128 for 6. .23 coming from that Akif Javed's over. ATF Southern Punjab has scored 48 from last 3 overs. And that reflects how the bowling has been for Balochistan. Ilyas is now 24 of 9 deliveries, and what he's looking to do is swing at everything. That's the last ball of the previous over. Look at that. On the leg stump, lovely height, not much pace, gets held up in the surface for a moment and then goes for a boundary. 23 in the over. He's conceding runs in that area more often. Not sure what the plan was here. You want to track someone on the short ball. Mine has to be towards middle now. Nice shot, but straight to the fielder. Some level of respectability to the score at the moment for ATF Southern Punjab. 129 for 6. We thought they might be just wrapped up under 3 figures the way they were going. Plenty of gaps in that field. Large boundaries, 72 meters. And what Khurram Shahzad now needs to do is bowl a very good over to cover up for the mess that has happened in the previous one. So he's just given one of the first 3 deliveries that he's bowled. If he can bowl a good one here, then that just balances out what happened in Akif Javed's over, the 23 runs. The problem with that is Sharoon and Ilyas, they're pretty confident now. They'll be eyeing to get boundary or so in this over as well. You see now what happens is that it's 3 dots in the over, just a single. Now that the pressure comes on Sharoon. He's got a 50 coming up for himself, and he also realizes that these are the death overs. So you just, as a fielding unit, want to push this agenda further and make him make
or push him to make a mistake, because he'll try to hit it now. He'll try to score 4. He's searching for a boundary now in the remaining 2 balls. He almost feels like it's his duty now to find a boundary. In the air. And it will drop in short because the fielders are right down to the rope. So you see, that creates that moment where you want to go for a release shot. And he actually brought that onto himself. 3 dot deliveries, he could have easily got off the mark. Time right in the deck, got tall on him. Lucky for him, it doesn't carry. For a moment, I think fielder could have done better. Now there was ample room to just play with soft hands and rotate strike. There was no need for 3 dots. Oh, what an amazing over. What a brilliant over. Just 2 runs of it. 130 for 6. Brilliant over from Khurram Shahzad, doing the damage control. Again, I'll come back to the dot balls. Haroon is on 48, Ilyasin's 24. Fielders are back, attached to the boundary. You've got ample space. Play into the gaps, singles and push for doubles. It's just the mindset that they have to go for the boundary because death overs. Full toss, doesn't get all of it. You know, they always say it was a full toss, you could play it anywhere, but it's not that easy to put them away. Sometimes, especially when they're just below that waist height, they can get big on you. But usually what happens when batter conceives that it's a full toss, it usually goes very hard on it. At times you can time it and place it anywhere you want. But when you have to apply all the force, you miss the timings. Down on one knee and smashes that one down too long off. They needed that maximum. Ilyas is working very hard to take ATF Southern Punjab to a total to fight with. This is precious runs for ATF Southern Punjab. Managed to just squeeze underneath it. Wasn't a bad delivery, but just how he opened up his stance and played it over long off. I don't think Mushtaq Ahmed would be very happy to see 137 on the board. He seriously could have wrapped it up a little earlier than this. He's still got an over to go after that. 30 of 11, Ilyas. What a cameo. See how deep he is in the crease. He's just waiting up, allowing himself that extra bit of time by getting as close as possible to the stumps and also to get underneath the ball. That's the way to go it, because if you're deep enough, anything shorter, you've got more time to play it anywhere you want. And when it's a Yorker, even then you can manage it. In a very handy cricketer, Mohammad Ilyas. Sharoon is on 49. He's on strike. One-handed shot will get him to 50. In the context of the game where ATF Southern Punjab was, it's a very important 50. Important 50 runs of 46 from Sharoon. Crucial partnership and crucial 50 for Sharoon. He came in, he absorbed the pressure. He knew what he had to do with the help
Some help from the other end. Managed to reach his 50. Really good shots to see. It shows the character, how he came and went about his business. Oh, that would be a no ball. That probably will be a no ball. Above waist. This is in the air. Won't get to the fielder either. Are they inquiring from the square leg umpire for that no ball call? What's happening? No, there's nothing. That's strange. That looked above waist. Ilyas cannot believe it. Let's have a look at it again. Why is he wearing his trousers so all the way up? Well, I don't know. It's touch and go. Looked very, very... No. So many factors to consider, whether he's bending, is it tipping. Good ball following the batsman there on that occasion. It's at the end of the over, 19 gone, 141 for 6. Potential recovery for ATF Southern Punjab. Partnership 61 coming off just 30 deliveries. Have a look at that. He thought that it had traveled. Wasn't even looking at the ball. Dive probably saving him. Oh, could have been a close call. What are they talking about here? Not only he's scratched his elbow on the turf, I think he also has felt the pressure of the dive on his left shoulder. But that's exactly, has nothing to do with what they were talking about. He'll have a say for sure. Shan Masood is in sublime form. Along with Bangalzai, they will look to capitalize on the opposition, take control of the game. Suddenly, after this partnership of 61, ATF Southern Punjab have almost made a match of it now. I mean, it was 80 for 6, now it's 141 for 6. It just changes the game completely. But that's something for Balochistan to think. They were on the top, had a very tight noose around ATF Southern Punjab, and all of a sudden, runs started to flow in. Probably death bowling, that's a bit of concern for them. In the previous game, they won by 2 runs, yes, but bowling can be a concern. Another good shot. He gets down on one knee and he feels more comfortable, Sharoon. He clears the boundary comfortably once again. Valuable runs are being posted on the scoreboard. Akif Javed continues to be expensive. He knows that Sharoon is playing on 56. Has to be something different. That was easy to pick up. Good length, good pace, no worries there, through the line. Has to change his strategy. Hasn't worked for him the previous 2 overs. Have a solid plan against these two, set the field up. Yeah, and just clearing that front leg. We'll just get one. The worry doesn't end for Akif Javed because both Sharoon and Ilyas are going great guns. Ilyas 33 of 14.
There's a strike rate of 235. What's he thinking? Where does he go now? Onside, maybe cow corner. There! Home run again! These runs are certainly going to hurt Balochistan. Ilyas, what an innings he's playing. Exceptional. That sound, my gosh, look at that. Again, the length, that is the problem. You cannot bowl here in the death overs. Every batter, every hitter will slog you out of the park. Such a stable base and fast hands. Calling for two, calling for two. Now Sharoon has confidence that the better hitter out of the two is his partner. 41 now, he's catching up. He gets the last ball of the innings to face with 15 already in the over, 2 sixes. Brilliant running. The moment he played, he pushed for second. They both ran really hard. Testing the fielders at the boundary. Oh, that's got to be again a second look, or is it okay? It's fine. Very surprised, Ilyas. Nothing from the umpires. That's the end of the innings. 156 for 6. And you got to give a standing ovation to these two, especially Ilyas, 41 of 17 down the order. 57 for Sharoon. 76-run partnership. This is the second highest 7th wicket partnership in T20s in Pakistan. And that's a wonderful job. They have taken this game to a fight. Balochistan would keep their hopes alive and heads down because they had them at 80 for 6. And they finish the 20 overs at 156 for 6. They'll be happy. A decent total there. If Javed finishing on 53, it's very expensive. But definitely, it's something for the bowlers to work with. Balochistan probably will be feeling less pressure. But Southern Punjab has that bowling arsenal. But it will take some captaincy from Salman Ali Agha to try and test Balochistan's batting. It's just these two. Have a look at that. 57 not out. Sharoon Siraj and Ilyas 41. That is the bulk of the scoring. Started off really well, Balochistan. Khurram Shahzad couldn't really get any wickets, but he was decent. Look at that economy. Akif Javed, that's the problem with the old ball. He was touch expensive, not touch, very expensive. Grabbed 2 wickets. But Yasir Shah, leading from the front, managed to bag 3 wickets and 1 for Ahmad Butt. They managed to book 80 of Southern Punjab on 156. Let's have a look at the highlights where the first half of the innings was just about wickets. They started off and just regular wickets were falling. Zain Abbas and Sohaib Maqsood started, but then just look at the shots that they're being attempted after this big clear 6 from Zain Abbas. After that, these shots were pretty half-hearted, so to speak. That was the first one. Zain went. Don't know what happened with Salman, just coming down, opening the face. Then it was just catching practice from here on. Yasir Shah was brilliant. No shot offered there from Moin. Couple of inside edges. The spinners were taking control. One of the odd 6s of boundaries were coming in, but it was just about the wickets. Sohaib Maqsood came back after that injury, but couldn't stay out for long. They were finding Shan Masood everywhere. Well, they never gained any momentum, ATM Southern Punjab. The wickets kept on falling, but then runs started to flow, and for a moment it looked like they were taking the steering from Balochistan. Ilyas and Sharoon
They were impeccable, punishing everything loose out of the boundary. In Balochistan, especially Akif Javed did struggle with his line and length. He was expensive. These are some brilliant shots to witness from Ilyas. Such a fast hands and good hand-eye coordination. Managed to bag those maximums and reach a decent total of 156. Let's go down to Sharun Siraj and have a word with him. Good knock, 57 of 49. Sharun, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये आपने क्या कर दिया शरून? इलियास के साथ मिलके सारा प्लान ही बलूचिस्तान का आपने इधर से उधर कर दिया, लेकिन मुझे बताएं कि रोल रिवर्सल हुआ, आपको पार्टनर अच्छे मिल गए इलियास में। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब इलियास भाई आए थे तो काफ़ी यानी कि प्रेशर था, मुझसे भी कुछ शॉट्स वगैरह नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर मोमेंटम बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फिनिश हुआ। ये बताइए कि माइंड में आप लोगों ने टॉस के टाइम पे 170 रखा हुआ था, लेकिन इससे अभी खुश होंगे क्योंकि 80 पे 6 थे, तो 156 यूल टेक इट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, T20 क्रिकेट है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है। जो आप टीम के लिए अच्छा कर दोगे वो बेहतर होगा, तो इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की कि टीम के लिए खेलूं। तो जैसे ही ज़्यादा आउट हो गए तो मैंने कहा थोड़ा लंबा जाता हूं, क्योंकि मैं शॉट्स वगैरह फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत सही खेलता हूं, तो इस वजह से। थोड़ा सा आपने देखा आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की शॉट सिलेक्शन शायद गालिबन सही नहीं रही, लेकिन इस पिच पे आपने खेला है, ये स्कोर डिफेंडेबल है? डिफेंडेबल तो ये पहले तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स ने अच्छे एरिया में बॉल्स की तो हमें काफ़ी स्कोर का एडवांटेज होगा, काफ़ी अच्छा स्कोर बन गया। चलिए शरून, बहुत मजा आया आपकी बैटिंग को देख के। वेल प्लेड एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग गेम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Sharun Siraj there, 156 for 6, 80 of Southern Punjab. So Balochistan will have to work hard. They'll have to come out, still gettable, yes. 157 at 7.8. We'll take a break.
हाँ, एक बार फिर आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे बलूचिस्तान और ATF सर्दर्न पंजाब का मैच जारी है। ये किंगडम वैली नेशनल T20 का 5वां मैच, जहाँ पे ATF सर्दर्न पंजाब ने 157 रन का टारगेट दिया है। ये स्कोर कार्ड शानदार इनिंग रही शरून सराज के एक यंगस्टर की, और उनके साथ एक कैमियो मोहम्मद इलियास एक सरप्राइज पैकेज बन के सामने आए। 41 रन के इनिंग के लिए 156 रन टोटल बनाए। यासिर शाह पिक ऑफ द बॉलर रहे, 3 विकेट्स हासिल किए उन्होंने 17 रन देकर। 2 विकेट्स आकिफ जावेद ने जरूर हासिल किए, लेकिन बहुत ज्यादा रन दे दिए एंड पे। 13 की इकोनॉमी, 1 विकेट हासिल की अहमद भट्ट ने। खुरम शहजाद ने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग की। उन्होंने बहुत अच्छी नींव उठाई अपनी टीम के लिए। इसी दबाव में है सदर्न पंजाब और 156 रन को डिफेंड करना इस पिच पर इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई, दाद तो देनी होगी जिस तरह की इनिंग इलियास ने खेली एंड पे। एक ऐसा टाइम था जब सदर्न पंजाब मैच से बाहर हो गई थी, और 76 रन की पार्टनरशिप जो शरून और इलियास के दरमियान हुई, ऐसा लगता है जैसे मैच में वापसी की है सदर्न पंजाब ने। आसान नहीं होगा क्योंकि पिच बेहतरीन है, बॉल बहुत अच्छे तरीके से बल्ले पे आ रहा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करनी पड़ेगी सदर्न पंजाब को इस मैच को जीतने के लिए। शारून सिराज ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया आज। उन्होंने जो इलियास के साथ पार्टनरशिप थी 76 रन की सिर्फ 36 गेंदों में हुई, उससे भी जाहिर होता है कि पिच बैटिंग करने के लिए कितनी साजगार है। 80 रन पर 6 विकेटें गिर गई थीं, और उसके बाद से इन दोनों खिलाड़ियों ने पलटकर वार करना शुरू किया और अपनी टीम को मुकाबले से बाहर होने नहीं दिया है। तो एक मोमेंटम है ये जो आखिरी पार्टनरशिप और आखिरी ओवर्स में मिला सदर्न पंजाब को। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस रवानी को वो लेकर चल सकते हैं। या होप तो डेफिनेटली सदर्न पंजाब की कैंप में आ गई होगी, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब सदर्न पंजाब ऐसा लग रहा था कि शायद मैच जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन एक सरप्राइज पैकेज इलियास बन के सामने आया। 41 रन सिर्फ 17 बॉलों पे, और डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी टॉप ऑर्डर बैटर्स को सदर्न पंजाब की, क्योंकि बहुत अच्छी पिच है बैटिंग करने के लिए। और जिस तरीके से शॉट्स खेले गए, अगर हम बात करें जिशान अशरफ, सलमान अली आगा, मोइनुद्दीन, ये बहुत ही ख़राब शॉट्स खेल के आउट हुए। दोनों ओपनर्स, दोनों बहुत फॉर्मेडेबल ओपनर्स, असद शफीक और हसीबुल्लाह। कप्तान सलमान अली आगा, जिनके लिए ये मैच भी ज़्यादा खुशकुन साबित नहीं हुआ। दोनों ही मैचेस में उन्होंने ऐसे शॉट्स खेले जो कि ज़्यादा पुरकशिश नहीं कहे जा सकते। शायद एक कप्तान के शायान शान भी नहीं थे। जी हाँ, और एक गलत मैसेज भी आप यंगस्टर्स को देते हैं कि आप अगर कप्तान हैं, पाकिस्तान से खेलें, टेस्ट साइड से खेलें, और आप इस तरह के शॉट मार के रह गए ऐसी पोजीशन पे जब आपकी टीम को ज़रूरत और आप आउट हो जाएं, डिसअपॉइंटिंग होता है। असद शफी का रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत ही शानदार करियर, 11 बार 50 रन बना चुके हैं, 92 रन उनका बेहतरीन स्कोर है। स्ट्राइक रेट भी शानदार है 117 की। अली माजिद, इनको आज पहले ओवर में गेंद सौंपी गई है। कल बॉलिंग का आगाज खुद किया था कप्तान सलमान अली आगा ने, लेकिन ये स्पेशलिस्ट हैं, नई गेंद को फास्ट बाएं हाथ के बैट्समैन से दूर ले जा सकते हैं। विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की शोहरत रखते हैं, गेंद को स्विंग करते हैं। इसके अलावा आराम से भी बिल्कुल मिस्ट्री तर्ज का एक्शन है। यहाँ बहुत तेज बाजू घूमता है इनका, बहुत ही एक एक्स फैक्टर डेफिनेटली इनके पास है। और इनका जो शुरू वाला स्पेल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉन्ग ऑन है और डीप स्क्वायर लेग। लेफ्ट हैंडर्स को कई बार इनने परेशान किया है। कल अली माजिद दायरे वाले बोलते रहेंगे एक दो। जब ये बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप एलबीडब्ल्यू की अपील से ज्यादा दूर रहते नहीं हैं, इसलिए अंपायर्स को भी चौकस रहना होगा। जहाँ दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं अली माजिद शाह। पिछले मैच में हमने देखा जिस तरीके से इन्होंने शजील खान की विकेट हासिल की, वो थोड़ा स्लो बॉल किया,
मुझे याद है कुछ अर्सा पहले तक ये बहुत तेज बॉल डालते थे, जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जा रहे हैं इंप्रूव होते जा रहे हैं। हवा में खेला लेकिन गेंद चली है 4 रन के लिए, पॉइंट बाउंड्री के बाहर। रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, दिलकश स्क्वायर ड्राइव हसीबुल्लाह खान का। जी हाँ, इसी वजह से हसीबुल्लाह का शुमार जो है पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन उभरते हुए ओपनर्स में होता है, क्योंकि अपने स्ट्रोक्स नहीं रोकते हैं, रोलिंग शॉट्स खेलते हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर बैटर हैं। जब आपका बैटर साथ विकेट कीपर भी हो तो बहुत खुशाइन बात होती है क्रिकेट टीम के लिए। फुल शॉट, फील्डर थे स्क्वायर लेग पोजीशन पर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक और चौका, पहला ऑफ साइड में, अब ऑन साइड में, ये बैकफुट से खेला गया। जी हाँ, लेंथ बहुत खराब रही, बहुत ही आराम से खेल दिया, फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन इतना तेज गया था शॉट कि कोई मौका नहीं उनके पास। इजी हो जाए फैसल। सदर्न पंजाब को बहुत मेहनत करनी होगी इस मैच में वापसी करने के लिए, क्योंकि बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड है ये, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है बलोचिस्तान की। अब्दुल वाहिद बंगल से ईशान मसूद, हारिस सोहेल, हुसैन तलत, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत टैलेंटेड साइड है बलोचिस्तान की। फील्डिंग और अपनी बॉलिंग से अब मैच में कम बैक करना होगा। इजी माना, डिफेंड किया बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ असद ने। पहला ओवर खत्म हुआ 9 के मजमूए पे। अरे भाई, क्या सोचते हैं आप सदर्न पंजाब की सिलेक्शन की? अगर हम बात करें, आमिर यामीन जैसे प्लेयर, शहजाद जैसे प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं और स्ट्रगल करते हुए मैं नजर आई, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। कैसा देखते हैं आप इस सिलेक्शन को सदर्न पंजाब की जानिब से? ये आमिर यामीन तो किसी सूरत में इस टीम से बाहर आप उनको बिठा नहीं सकते ज़्यादा देर तक, खासतौर पर ऐसे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं, मोइनुद्दीन, ये जैन अब्बास, और उनकी कारकर्दगी वैसी है नहीं जैसी आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन से तवक्को करते हैं। तो आमिर यामीन जो हैं वो तो अपनी सिर्फ बैटिंग के बल पे ही इस टीम में खेल सकते हैं, बैटिंग जिसकी कमज़ोर पड़ी है इस टीम की। इसीलिए मुझे बहुत हैरानगी हुई उनको बेंच पे देख के। इवन मोहम्मद शहजाद, जिनका ताल्लुक डीजी खान से है, बहुत ही उभरते हुए नौजवान प्लेयर हैं, काफ़ी फ्यूचर है उनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जब आपकी टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, पहले मैच में भी हमने देखा, दूसरे में भी देखा, मोइनुद्दीन 2011 में शायद पहली बार खेले थे T20, 10 साल के बाद उनका कम बैक करवाया है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं नज़र आई हमें यहाँ पे सदर्न पंजाब के कैंप में, और उनका उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ऐसी पिच पे आप इतने कम स्कोर बनाएं, ये जस्टिफाइबल नहीं है। और दूसरी जानिब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नया खून शामिल हुआ है बलूचिस्तान की टीम में। हसीबुल्लाह खान, बंगल ज़ईब, असद शफीक को जिस तरह टॉप ऑर्डर में लाया गया, उससे एक तवाज़ुन नज़र आ रहा है कि हसीबुल्लाह बिल्कुल नए नए हैं इस क्रिकेट के उफक पर, और असद शफीक को ईशान मसूद ओपनिंग नहीं कर रहे, और इमामुल हक जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए समरसेट चले गए हैं। तो एक ज़रूरी था एक आजमूदाकार बैट्समैन हसीबुल्लाह के साथ जो नए और जो कहते हैं ना तजुर्बे का वो तवाज़ुन ला सके।
यहाँ पे दाद ज़रूर देनी होगी मुश्ताक अहमद को और यासिर शाह दोनों को। ये प्लान बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर आप देखें हसीबुल्ला मुश्ताक अहमद आपके स्क्रीन पे हसीबुल्ला और असद शफीक से ओपन कराएं तो बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे हसीबुल्ला असद शफीक से। नंबर 3 पे बंगल जही खेल रहे हैं, उसके बाद शान मसूद आते हैं। तो जब ये दो बलोचिस्तान के लोकल यंगस्टर्स इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो मोराल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टैक्टिक है मुश्ताक अहमद की जानिब से। स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन है। एतमाद से खेलकर 1 रन हासिल किया हसीबुल्ला ने। और जो काबिल गौर बात है कि जो हसीबुल्ला खान है या अब्दुल वाहिद बंगल जई हैं, ये वैसी बात नहीं कि सिर्फ अपने इलाका की निस्बत की वजह से बलूचिस्तान की इस टीम में खेल रहे हूँ। ये मेरिट पर खेल रहे हैं। ये किसी भी इन 6 टीमों में से खेल सकते हैं जितनी इन दोनों में सलाहियत है। और ये बहुत बड़ी बात है बलूचिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये किसी भी टीम में कभी भी आ सकते हैं। एक और प्लेयर जिनका बहुत इंतज़ार है पाकिस्तान टीम को कि कब ये फिट होके पाकिस्तान टीम में दोबारा आ सकें। यहाँ पर 2 रन के लिए बुलावा दिया है और लेना चाहते थे शफीक। मोहम्मद इलियास को देखा जब हसीबुल्ला ने तो उन्होंने खतरा मोल लिया नहीं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़दार फील्डर्स में समझे जाते हैं। ये अच्छा दिन रहा है अभी तक इलियास के लिए फील्डिंग और बैटिंग में। तो बस बॉलिंग में और एक कोशिश उनकी बाकी है। और बहुत मुझे खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि 41 रन की आज उन्होंने खेली, जो पाकिस्तान में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट में नंबर 2 पे आते हैं। वो किसी भी ऐसे प्लेयर ने जिसने 40 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट रही है उसमें नंबर 2 पे इलियास का नाम आता है। 241 रन की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन्स किया आज। अच्छी गेंद थी समीन गुल की, बिल्कुल विकेट टू विकेट। लेग साइड में इसका रुख मोड़ नहीं सके हसीबुल्ला। 2 ओवर के बाद बलूचिस्तान 13। इलियास से भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड होगा। ये वो जिनका आप जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान के लोकल दूसरे प्लेयर अब्दुल वाहिद बंगल जई, बहुत ही टैलेंटेड हैं। 200 रन की बड़ी इनिंग खेली पिछले सीजन में। जैसे आपने कहा कि ये ऐसे 2 प्लेयर हैं जो किसी भी टीम में कभी भी आ सकते हैं। और इनके अलावा एक और खिलाड़ी हैं, वो भी खेल सकते थे किसी भी दूसरी टीम में। अच्छा कवर ड्राइव बगैर किसी रन के 4 रन की गेंद को रोका। बिस्मिल्लाह खान की बलूचिस्तान की इस टीम में जगह नहीं बन सकी क्योंकि हसीबुल्लाह खान नया टैलेंट था और सिलेक्टर्स ने उनको आजमाया। ये बहुत ही अच्छा फैसला पाकिस्तान कप के बाद यहाँ पर भी उनको मौका दिया T20 में, जिसके वो हकदार थे। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान है, अगर बलूचिस्तान की टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी तो उनको किसी और टीम में खिलाया जा सकता था। वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से भी ये T20 टूर्नामेंट खेल सकते थे। इस वक्त बलूचिस्तान की सेकंड 11 के कप्तान है। यहाँ तक कि सेंट्रल पंजाब की टीम में वो विकेट कीपर की हैसियत से भी खेल सकते थे। इस सदर्न पंजाब की टीम में आप उन्हें बैट्समैन के तौर पर खिला सकते थे। अब तक अच्छी बॉलिंग की है सदर्न पंजाब के दोनों ही बॉलर्स ने, वो जगह नहीं दे रहे। और आमतौर पर जब ऐसी बॉलिंग हो रही होती है तो फिर बैट्समैन मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है शॉट, और उसी में फिर गलती का इम्कान होता है। फुल टॉस, ये आप मुझे मार गेंद थी और इसे सिर्फ रास्ता दिखाना था स्क्वायर लेग्स पीछे का 4 रन। तो ये इनायत थी अली की हसीबुल्ला पर। यार थोड़ा सा लिहाज आगे से हसीबुल्ला ने भी किया क्योंकि जैसा ये बॉल था ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाना चाहिए था, पार जाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से टाइम नहीं कर सके। लेकिन प्लेसमेंट कमाल की रही, 4 रन जरूर हासिल किए हसीबुल्ला ने। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है ये, बहुत जल्दी उभर के सामने आए हैं डोमेस्टिक सर्किट में।
दूर से खेलने चले गए। एक ऐसा शॉट है जो ज्यादा आसानी के साथ हमने लगते हुए देखा नहीं है। टेक्निकली बहुत ही साउंड लगते हैं आसिफुल्लाह, जिस तरह के वेट कीपर भी हैं। ज़्यादा टाइम दूर नहीं है वो कि जब इनको पाकिस्तान का भी में कंसिडरेशन होगी। डेफिनेटली 3 ओवर्स के बाद 18 बगैर किसी नुकसान के बलोचिस्तान। काफ़ी खुश होगा इस वक्त बलोचिस्तान का कैंप, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में है। सिर्फ 139 रन और दरकार हैं, 102 बॉलें हैं और बहुत ही लंबी बैटिंग लाइनअप है। ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए उनको। अपरकट किया, फील्डर हैं पीछे तैनात, लेकिन गेंद उनसे दूर चली गई और अंपायर ने छक्के का पहले इशारा दे दिया है। असद शफीक ने इस रफ्तार को काम में लाए बड़े दिलकश तरीके से। बहुत देर से खामोश नजर आ रहे थे लेकिन अब नहीं। या ये बताता है कि ये पिच कितना अच्छा है कि आउटसाइड एज भी कैरी कर गया 6 रन के लिए। बैकफुट पे जरूर खेले थे, फ्लैश करना चाहते थे, लकी रहे कि बॉल हवा में रहते हुए 6 रन के लिए चला गया। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन ये पिच का कमाल है। यहाँ पे करता रहे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर किंगडम वैली नेशनल T20 टूर्नामेंट जिसका आज तीसरा दिन है और किंगडम वैली के मुतालिक मजीद तफसीलात आप हासिल कर सकते हैं इसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जिसका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। आप इनामात जीत सकते हैं और आप नए किंग बन सकते हैं। अच्छा शॉट खेला, मिस फील्डिंग के बाद ये दूसरे रन के लिए भी पलट आएंगे। देखिए नजरें हटा ली थी सलमान अली आगा ने, जिनके लिए आज ये अच्छा दिन अभी तक साबित हुआ नहीं है। हालांकि ये टूर्नामेंट के इब्तदाई अय्याम है अली, लेकिन सलमान अली आगा को मुझे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कप्तानी का दबाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है क्योंकि जैसे टेस्ट साइड से जब आप खेल के आते हैं तो आपको डिफरेंट होना है बाकियों से। इस बार शानदार शॉट, उतनी आला कोशिश थी फील्डर की लेकिन उनकी डाइव रायगा गई और गेंद हाथ पार निकल गई। एक और चौका असद शफीक का। यहाँ बहुत ही कमाल का फुटवर्क, बैकफुट पे जल्दी गए, चांस था फील्डर के लेकिन शायद थोड़ा सा ऊपर रहा बॉल और 4 रन के लिए चला गया। ऐसा ही शॉट इन्होंने अटेम्प्ट किया था पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे, लेकिन उसमें बाउंस थोड़ा ज्यादा था। इस बार लेंथ बहुत कमाल की थी, कंफर्टेबल लेंथ थी, उसके बॉल के ऊपर आए और आसानी से 4 रन हासिल किए। असद शफीक बैकफुट पर हमेशा से ही उनकी शोहरत रही है अच्छे स्ट्रोक खेलने की। ऑस्ट्रेलिया जब गए थे आपको याद होगा इनकी वो ब्रिस्बेन के डे नाइट टेस्ट मैच में सेंचुरी पाकिस्तान टीम को जीत के बहुत करीब ले आए थे। जी हाँ, शायद उनके करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग होगी वो, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्क कमिंस का सामना किया डे नाइट मैच में। आसान कंडीशंस नहीं थी, शायद किसी भी पाकिस्तानी की ऑस्ट्रेलिया में वो सबसे बेहतरीन इनिंग होगी जो मुझे लगता है जितनी मैंने देखी है। जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली वो मैच को लेके गए और काश वो मैच फिनिश कर सकते और मैच जिता सकते
तो शायद असद शफी का करियर और लंबा हो सकता था। हम कह सकते हैं ब्रिस्बेन में वो किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की बेहतरीन इनिंग्स थी। चलो चलो तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के जो माजी के बैट्समैन हैं उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। माजिद खान का, हनीफ मोहम्मद ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था तो दोनों इनिंग्स में मेलबर्न में सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गए थे। पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, दूसरी इनिंग में उनको एक मुतनाज़ फैसले के तहत आउट दिया गया जब वो 90 में पहुंच चुके थे। से ये जाहिर होता है कि आपने बहुत पहले से क्रिकेट देख रखी है। मैं सिर्फ अपने जहां से मैंने सुन देखा भी मैं रखा उसके है। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। बैटिंग आज पे अगर हम बैटिंग कार्ड देख सकते हैं, हसीबुल्लाह 15 रन पे मौजूद है, असद शफीक 16 रन पर हैं। लेकिन अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें, शान मसूद, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, अमाद बट, हारिस सोहेल, हुसैन तलत, बहुत ही फॉर्मिडेबल और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है बलोचिस्तान की। प्रॉबेबली अगर हम कहें कि इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने वजह कहा। बहुत ज़्यादा गहराई है बलूचिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में। और शानदार शॉट, असद शफीक ने इसे रिवर्स पैडल कर दिया बड़े खूबसूरत तरीके से। और अली माजिद इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर वार किया और 4 रन पा गए। जी हाँ, ये इनोवेशन है, ये मॉडर्न डे क्रिकेटर है, ये T20 स्पेशलिस्ट शॉट है। ये वो जानते हैं कि तेज बॉल कर रहे हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल कर रहे हैं, सिर्फ बल्ला लगाना था कोई नहीं और 4 रन हासिल कर ले। ये सेंसिबल क्रिकेट है। अच्छा आगाज नहीं रहा है ये सदर्न पंजाब की बॉलिंग की जानिब से, क्योंकि अर्ली विकेट्स चाहिए थे उनको, वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी मैच दूर चलता चला जाएगा। अच्छी डिलीवरी थी इस बार, इनवर्ट मोमेंट देखने को मिली और बिल्कुल चौंका दिया असद शफीक को। यहाँ बहुत तेजी से बॉल अंदर की तरफ आया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से बॉल अंदर आ जाएगा। ये PSL खेले इस साल अली माजिद पेशावर ज़ल्मी के लिए। हाँ, जब गद्दाफी स्टेडियम में बॉलिंग की, एलेक्स हेल्स को परेशान करके रख दिया था। उस दिन अगर विकेट कीपर गलतियां नहीं करते तो शायद ये मैन ऑफ द मैच हो जाते। यहाँ एक्स फैक्टर तो डेफिनेटली इस बॉलर में है। जैसे जैसे क्रिकेट ज्यादा खेलते चले जाएंगे, तजुर्बा आता चला जाएगा, आई एम श्योर बेहतर होते चले जाएंगे। क्योंकि बड़ी क्रिकेट जब आप खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं तो नेचुरली आपके टैलेंट में वो निखार आता चला जाता है। और टैलेंट तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अली माजिद शाह में, कबीर वाला से इनका ताल्लुक है। और एक डेफिनेटली एक डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं, एक एक्स फैक्टर जरूर है इनके अंदर। ज्यादा जल्दी करने की बलूचिस्तान जरूरत भी महसूस नहीं कर रहा, खासतौर पर जो हसीबुल्लाह हैं, उन्हें 14 गेंदों में 15 रन बनाए हैं। जानते हैं दूसरे एंड पर असद शफीक जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ा हदफ भी नहीं है सामने, कुछ वक्त ले सकते हैं। साइड में खेलने चले गए, गेंद बैट की फ्लैप पर लगी, इससे अंपायर आमादा नहीं थे। यहाँ पिच भी लेग स्टंप के बाहर हो रहा था, बॉल ऊंचा भी लग रहा था शायद। अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। यहाँ पे इख्तिताम हुआ 5 ओवर्स का 37 बगैर किसी नुकसान के बलूचिस्तान। Bowling change, right arm. Bowling over. It'll take some quick-witted captaincy from Salman Ali Agha to restrict Balochistan because they are on the right track. No hiccup so far. 37 in 5 overs. So Shafiq and Hasibullah. They look comfortable out there, Shah Faisal. They do. Decent start. Mohammad Ilyas
was the star with the ball in the first game for Southern Punjab. He was the star with the bat today as well. 43 games, 46 wickets to his name. He'll be looking to make inroads because his team needs that. Oh, straight shot. That'll beat the fielder. And it's really well timed from Asad. It's been a sublime form. No better sight than seeing Asad Shafiq driving down the ground. It wasn't a half volley by any stretch of the imagination, just a little check drive on the up. But you can do that on this pitch. Slightly aerial away from Ilyas. Asad Shafiq into his stride. He's really enjoying that new role of opening the batting in T20. That's a better delivery, just cramping Asad Shafiq for any room. Yeah, he's looked a different person, a different batter. In T20 format, he's worked a lot. But somehow, whenever he plays short, it has made it look easy to score runs. That's the first game, Mohammad Ilyas. What a comeback for him. That was the first wicket down. He's got some decent pace, hitting the right length. Snipping the ball back into the right-hander. Getting good bounce as well. That's flicked up nicely. There'll be another boundary. Problem for Southern Punjab continues. Wrong line. Ilyas very disappointed with himself. Can't allow a player of Asad Shafiq's caliber and style to miss out. Delivery directed to the leg side with very little protection. Almost carried all the way. It's the roll of the wrist. Ilyas definitely disappointed. Balochistan doesn't have a lot of... ATF Southern Punjab rather doesn't have a lot of runs to play with. And this is already a very, very good start. Some extra bounce with good running. That's what they will do, Asad and Hasibullah. Very busy between the wickets. Asad Shafiq definitely is looking a different player. Adjusting with the bounce very nicely and calling as soon as he hit the ball. Excellent communication, good running. That move to Balochistan from Sindh, probably that's the new challenge that Asad Shafiq needed in his illustrious career after losing his place in the Pakistan side. He was a revelation in the 50-over Cup, Pakistan Cup, towards the back end of the season, helping Balochistan lift the title. And once again, he's at the forefront. Changes in the field for the left-hander. Then back, short third man back to the boundary, and they bring in the point into cover. Again, trying to cover up that area into the offside where he loves to play. That's a good ball, just angling in, giving no room. It's good length. They need wickets. And what do you order, Faisal? It's not going to be easy, but Ilyas, at the moment, the field he's got one sweeper on the offside, one on the onside. He's looking to cover too many things at one time. He has to take a little bit more chance. Probably get a slip, get a sweeper on the offside, and attack that off stump and trying to get Hasibullah in his strong area. Beautifully driven through the gap. That's one of his strengths, and would love to watch that again and again. Ends the over with a boundary, Hasibullah. Balochistan 50 without loss after 6. Seems like
Salman Ali Agha has been really defensive in his approach. It's really hard to contain such target on the surface they're playing. It looks like a pretty decent one. Power play done and dusted. Balochistan 50 without loss. That's really good effort. In the previous game they scored 53 on 2. You did ask skipper Yasir Shah at the toss about troubles in power play, but with this formidable opening pair, they can get the boundaries away. Hasib got off to a good start. A couple of freebies there from Majid. Waist high full toss was pulled away. Asad Shafiq, exquisite. Pleasing drive, but then Ilyas conceded 3 boundaries in the 6th over. None better than the last one by Hasibullah. They're in complete control, Balochistan. Easy, Sana. Captains take the responsibility with the ball, and I think it's a good decision, especially with Hasib on the other end, the left-hander. I would like a bit more aggressive approach in terms of field placement. You made a good point that Salman Ali Agha seems very defensive, and you're absolutely right, because they cannot contain Balochistan. They have to take wickets, and at the moment we just see regulation field, 4 fielders inside the ring. Easy, Aga. Well ball. At least what he can do, please tempt the batters to go over the top, bring the mid-off up, look for the batters to go against the spin over the top. But at the moment it's pretty conventional. Very well ball, Aga. Very well ball. That's an easy single for Asad Shafiq. So they have to create some sort of circumstances for, especially Asad, if I talk about, he's on 31. He loves to rotate strike. You at times close that single option for him. He forces himself to play a big shot. And also I would like for Hasibullah, the mid-on fielder, to come up and throw him the challenge to go against the spin over the top. Side edge. He managed to get a single. I wouldn't mind slip. Just try to create some doubt. Otherwise they'll be cruising along. Looks like they're just waiting for the batters to make mistake. At this level, top quality professionals, they won't allow you these chances very often. You got to make the play, Salman Ali Agha. Very well ball, Aga. Good over here. He'll take the single. Asad Shafiq. 7 overs gone. Balochistan 53 without loss. Wicket column so far. Nothing to talk about. Ali Majid, Samin Gul started off. Mohammad Ilyas. Salman Ali Agha, the 4 bowlers operating. There hasn't been no success for them. They're bringing on Faisal Akram from the pavilion end. Left arm unorthodox. Have a lot of runs to play with the young spinner. Interesting. Once again, Salman Ali Agha is going pretty conventional with his field. Nothing to suggest that he is looking to take wickets. If they don't take wickets, they're going to lose anyway, so they have to take that chance. I'll throw a thinker towards you. Would they have utilized Faisal Akram in the power play with the new ball just to do something different to grab wickets? Easy, Aga. Faisal. Shaba mera bra tagda pehle. Like I said, Salman had to make the moves, so, and generally there is also theory going around in power play. You rotate bowlers quite regularly, so the batters doesn't get settled into one bowler. Easy mana hai kya? This full toss, loose delivery. Asad hit it straight to the fielder. With defending this kind of total, never a bad idea to try all the options. And if you can make some inroads, then it allows you that breathing space, even if it's power play. But it looked like they went pretty conventional, even with their plans and with their field placings, even now. Just
Something to learn as a young captain. इजी आगा इजी Don't really time it. फैसल शाबाश It's मेरा not भरा that easy to score runs. We've seen that. Yes, looseners are being put away. But at times it Easy seems नहीं है like विकेट batters have to लूज create कर अच्छा shots. रहा He needs to capitalize. दे दाना गुड थ्रो यार गुड Pushing थ्रो hard for the second one, throw. and it won't be available. शाबाश रून Faisal Akram, with his variations inside the power play when batters are looking to go hard, could create opportunities. So yeah, it's not a bad call. रून आई जल्दी आई But now that he's not bowling inside the power play, still look around at the field if we get a chance after this delivery. Pretty conventional. Right down the ground, won't travel. Looks like all of a sudden, when you move into the second innings, the pitch changes the color. Not easy to score. फैसल सेव करना बोल है The sun is beating down. I still think that the ball is coming on reasonably well. इजी आगा गुड ओवर शाबाश Like you may say that the middle of the pitch, the ball is not coming on as much, but from a length, it is coming on. You have to keep an eye on that as the day wears on. 8 gone, 56 for none. इधर आए हसन हसन जा 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 उधर ही आ जा बस मारना भाई काजी चलो बल्ले तो रंग रखना Captain continues. एक है He's got protection, but running will be very crucial. It's good fielding in the deep. Southern Punjab has that sort of reputation. Whenever they come into the tournament, they walk out. It seems like they're full of troubles. In few games, everything seems to be sorted out. That has been the story every now and then. When he lifted up, there's the fielder, and it's gone. Hasibullah, the first one to fall down, and Salman Ali Agha has the first laugh. That's the mistake that ATF Southern Punjab was hoping for, and young Hasibullah fallen into the trap. Lost a little bit of momentum to his innings. Again, that went too square. He was looking to hit it straight. In the end, had to drag it and found the only fielder out square of the wicket. The knock that promised a lot has been cut short because of that error from the youngster. Gone for 21. Balochistan 57 for 1. Abdul Wahid Bangalzai, fresh from a half century in the first game. 17 games, 344 runs. That average is on the up, 350s. And strike rate 107. Very, very promising youngster. And the way he played in the first game will make you look forward to his innings again. Because he came out of the blocks very quickly, started off his innings with a massive sixer and then continued with the same rhythm. Right down the ground. Bangalzai, he doesn't like to hang in the crease. That's Asad actually. That's Hasib. Trying to force that shot. Really couldn't get underneath it. Won't be a problem for Balochistan. They've got ample batting left. Bangalzai both are capable. Have a look at that. Couldn't really get into the line, and
ended up playing it way too square. Kabaga. Hey, very well ball aga. Won't be much trouble for them. Aga last ball ah. Save करना save. Even he has changed his game a lot. And the headgear as well. Abi, good over yaar aga. Good over. Wow. Dot to end the over. They've got 1 wicket, just giving away 2 runs. Aga Salman, Balochistan after 9, 81, 80, 58 for 1. Shan Masood, Hussain Talat, Ahmad Butt, Haris Sohail. New roll. They're all queuing up in the middle order. Probably to grab some attention from the national selectors as well, because that's the slot Mohammad Wasim will be looking to fill. 4, 5 and 6 apparently are the trouble spots in the national team in this format. Nudged away, pushing hard yet again. They'll manage to get that double. Oh, is there trouble? They ran off really quickly, but we'll have to go up and check. That's another blow for Balochistan. Asad Shafiq is not very tall. Maybe his legs were pumping very, very fast without covering too much distance. We'll have to see. The throw and the pickup was in time. Asad Shafiq did beat it in the end, but only just. Throw was slightly wide and the wicketkeeper had to drag it towards the stumps. That allowed Asad Shafiq to drag the bat in and complete the 2 runs. Great technique. He always had a great technique, Asad Shafiq. Just a teaser for ATF, Southern Punjab. For a moment they thought their man. A good spell for ATF Southern Punjab. The last 3 overs, they've stopped the flow of boundaries. They took a wicket as well. The required run rate is suddenly jumped up above 9. We're approaching halfway stage into the 10th over of the innings. Block that one. And it's in the gap. That's what he can bring to you. Faisal Akram under pressure. Great strike from Asad Shafiq. Look how far he had to reach out for the ball. Stretching his arms way out and hitting the ball in front of square between the 2 fielders. Excellent strike from the experienced man. Was there to be hit. And you could hear the disappointment from Asad. Just to give you an idea how he has evolved his batting. Just in 2021, his strike rate was 108. And in 2022, climbed up to 154. That's the difference, a huge difference. Like I said, the challenge of moving on from Sindh to Balochistan has really helped him. Look at the run out once again. The good thing is the communication was good. There was no indecision, and that always allows you to get in. Slightly wider throw also helped. Wild swing from him. Well bowled Faisal Akram, just giving enough air to take it away from Asad Shafiq. Some turn as well, the googly from the left armour. Asad Shafiq probably for once didn't read it. He was playing for the leg spinner.
that's a pitch and taken. That's a big wicket for 80th Southern Punjab. And Faisal Akram has done the trick. Once again, Asad Shafiq was playing for that leg spinner. It was the googly. Looking to play it on the onside. Got the leading edge. Two googlies in a row. Excellent bowling from the youngster. He foxed the experienced man with his guile and variations. Asad Shafiq disappointed, but credit goes to young Faisal Akram. Really landed those two googlies in perfect position. Asad Shafiq gone for, after playing quite nicely. 43 he got. Balochistan 66 for 2 at the halfway stage. राइटी है राइटी आगे दोनों विकेटें गिरी हैं यके बाद दीगरे 9 रन के इजाफे में, जिसकी वजह से शान मसूद खेलने के लिए आए हैं। पिछले मैच के बैटिंग हीरो। दोनों के दरमियान सेंचुरी स्टैंड देखने में आया था। मंगल ज़हीर, शान मसूद दोनों ने अपनी टीम को बहुत मजबूत पोजीशन फराहम की थी। फ्लाइटेड गेंद लेग साइड में खेलने के लिए गए, ये गुगली थी जिसको रीड नहीं कर सके असद शफीक। और दिल बड़ा हो गया होगा फैसल अकरम का, ये इतने नामवर बैट्समैन की जब उन्होंने विकेट हासिल की है से एतमाद बढ़ जाता है। सिकंदर बख्त आ गए कमेंट्री बॉक्स में, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मजा अब आएगा। 111 की पार्टनरशिप थी पहले मैच में इन दोनों की, अब कहेंगे कि अब बड़े बच्चे खेलने आ गए। शान मसूद, मंगल ज़ही दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, और अगर बलूचिस्तान को इस मैच को जीत के 2 पॉइंट हासिल करने हैं तो इन दोनों में से कम किसी एक को आज वही करना होगा जो से 111 की पार्टनरशिप में पहले मैच में कर गए थे। यहाँ और खूबी इनकी ये है कि ये पता भी नहीं चलने देते। कई बार इतनी आसानी के साथ ये रन बना लेते हैं। दोनों की टेक्निक बहुत आला है, इसलिए बड़ी परेशानियां खड़ी करते हैं। फील्डिंग टीम का कप्तान होता है उनके लिए। सलमान अली आगा डिफेंसिव लाइन इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं, मिडल स्टंप से ऑफ स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। रन्स मिलेंगे यहां पर मंगल ज़ही को, शायद 4 ना हो। अच्छा स्टॉप, और इस असना में 3 बना लिए। अच्छी रनिंग दोनों की। यहाँ सामने रन्स नहीं मिल रहे थे, इम्प्रोवाइज किया मंगल ज़ही ने, और इनको हमने 1-2 साल पहले देखा था तो इतने ज्यादा इनके पास शॉट्स नहीं थे। खूबसूरत तरीके से गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए, स्टंप से आगे निकल गए थे। गेंद ज्यादा फाइन जाए और ये भी गैप में चली है। इस बार एक ही पार इक्तिफा करना। From outside the off stump, it was always bound to go to a fielder, because when you fetch it from outside the off stump, it won't travel the distance. And that is exactly what happened with Yasir Shah. He had to go after the bowling, there was no doubt. But sense should have prevailed. Gone without scoring, 125 for 7. Well, now
This is getting really interesting. You have to give credit to Salman Ali Agha and the bowlers as well. Spinners have done their work. Now it's up to the pacers, who have been pretty decent in these death overs, managing to grab wickets every now and then. 10 deliveries, 32 runs. We've got Kashif Bhatti walking out with Hussain Talat. Outside off stump. He'll take some fielding. Does well. But it will allow 2 runs. They've made a mess out of it. Balochistan, such a huge batting. Not a good shot selection, but that's the instinct, normal instinct. Could have played it towards the third man, an uppercut, and falling for the trap. They have been falling for the trap. Yeah, also very clever bowling by Imran Randhawa. He bowled it into the pitch. And outside the off stump where Yasir Shah had to fetch it and lost his wicket. Looking good. Straight to the fielder. Nothing's working so far for Balochistan, and I think the pressure has started to get to them. Another low full toss. When was the last time they put the ball on a pitch? They've been dealing in low full tosses, these two fast bowlers, Randhawa and Samin Gul, and it has worked for them perfectly. Maybe they're trying to hit it too hard rather than time it. But it's working for ATF Southern Punjab. They won't mind it. Kashif now, 8 deliveries, 29. It's getting tighter. Goes hard. Probably will steal a double. No, they won't. Had to abort it. Yeah, they could have come back for 2. There was 2 available, but probably, maybe, 10th Dalit wants to keep the strike, wants a boundary to end this over, because 28 runs of 7 looks like a mighty task at the moment. And the look on Mushibai's face tells you a lot of stories. 1 delivery to go, 5 already off this over. Imran Randhawa would like not to concede the boundary, and that's exactly what Hussain Talat needs to do that. He has to go big, he has to pick a boundary. A 6 would come really handy here. Can he get it? Right to the fielder on the 1 bounce. That's brilliant bowling. Ends the over. 19, Balochistan 130 for 7. What might they be discussing? Let's go after it. There's nothing to think, there's nothing to talk. Everything is to be hit. That's what the plan should be from here on. 6 deliveries, 27 runs, mighty task. As we see, Northerns are in the house, so are the KPs. They're facing each other in the next game. That will be coming live to you at 1:45. As we see Samin Gul in for the last over. Gonna be a mighty, mighty task for Hussain Talat. 6 legal deliveries, 27 to chase. Hussain Talat, the last hope for Balochistan. Oh, that's brilliantly bowled. And it's taken. Oh my God. Tarun, he's shown what he can do with the bat, and this time it was a brilliant take. Superb. That is all we can say. Run out. Still thinking, still maybe looking at the no ball, or maybe the cleanliness of the catch. These are the 2 only things that they can wait for or check at the moment. Samin Gul, he's suggesting no. Well, bowlers never think that. They're always inside the crease. A lot of things going out in the middle. As they look at the no ball. I think he's safe. Right, now let's move on to the catch. Still checking. Seems like some part of the heel is behind that line. It's
Probably a better angle. Yes, that one can work things out. Seems fair to me, but let's see what the third umpire calls. Could be a simple decision. Now coming to the catch, Sharon does really well. Was there a need of going to the third umpire for that? Or maybe after he dived, they'll have to see it from another angle. Well, they always have to be 100% sure because, you know, in terms of, I can feel that being a batter. It's not a clean catch, you would feel for that, especially in this intense situation. Well, it's a brilliant take from Sharon. Has been exceptional today. I think he's done well. You got to give it to Sharon. You got to give him to his word also. If you're not getting the right angle, you have to trust the fielder, his call. The leg umpire is so close to him. But he can't see it. Normally they would like to check if the elbow hits the ground and then the ball is spilled out. I think that can't see the ball, so it's between the hands. You got to give it to the fielder. Definitely. Should give him out. Is given out. Another excellent wicket going to Sameen goal. It's Hussain Tala this time. Those low full tosses, they have damaged this Balochistan last few overs. Scored 30 runs. Was caught by Sharon of Sameen goal. 130 for 8 Balochistan. Well, now, last over started off with a wicket for Sameen goal. 2 new batters, Khurram Shehzad and Kashif Bhatti, 27 of 5. I have to give it to 80 of Southern Punjab. It seemed like an easy task for Balochistan, but no, they have been superb. Another good delivery right in the block hole, tipping Yorkers. I'm not sure what their plan is against the low full tosses. Either you can use the crease, you can ramp it up, you can open your stance. Yeah, this one probably you can give it to Hussain Talat. He was trying to flick it, but again, no power. You have to go hard. At least time it well enough over the infield. Oh, half chance there. Excellent effort from Sameen goal. They're all over Balochistan. Oh, that was a heroic effort by Sameen goal. Almost pulled up a blinder. This could not quite hang on to it. He just almost reached there in his follow-through. 10 on 10 for the effort. Definitely never easy for a tall fast bowler in his follow-through. Manage and make that attempt for the catch. 3 deliveries, 26. Another good one. It's good ploy against the tail-enders. Just pitching it into the wicket, getting some bounce and beating them with pace. Wonder where Akif Javed is hiding at the moment. Because it was his over in the last, he gave away 23 runs, and that's the difference here between Balochistan and Southern Punjab. And that was a rare short delivery. They've been dealing in low full tosses, but surprised the batters with those short ones every now and then. Brilliant over so far, just one coming off it. Might run away for 4. Yes, it will. The feeder was inside the circle.
too little, too late. Yep, absolutely. Too little, too late for Balochistan. They need 22 of one delivery. There is absolutely no chance of getting those runs now. And you've got to give it to the captaincy of Salman Ali Agha. He had to make it up. So he did. Bowled beautifully himself. Rotated his fast bowlers very nicely. And now they're in a position, they're about to win this game by 22 runs. Who would have thought that? Balochistan has a lot to think about, especially today's approach. Wasn't a big task. They threw their wickets around. That'll do it for them. Substantial effort from ATF Southern Punjab. It wasn't a big total, but the way they came and approached this, they have managed to defend it. And against Balochistan, who had an ample batting to take it home. Fantastic. I think this is a complete performance by this ADF Southern Punjab. They were down and out at the moment. They pulled back things in batting, courtesy Ilyas and the young Sharoon. And then in the bowling lineup, they were off to a good start, Balochistan. They pulled back things again, courtesy captaincy of Salman Ali Agha and his bowling spell. And in the end, Balochistan getting short of 21 runs. It is one of the most amazing comebacks that I have witnessed at national T20 level. And I'm definitely sure Salman Ali Agha would be definitely proud of his boys for this effort. They've almost snatched the victory from Balochistan. But still they have a lot of thinking to do for the games to come. In their playing 11, in their selection, they have a bit of work to do. It's a good effort. You can just tell they are all united together. Just a couple of changes in the batting order, batting lineup would do for them. They are a very young side with a young captain, and this victory will definitely boost their confidence a lot. This was a story, Balochistan. It wasn't a high task. Such a week with 43. Hasibullah started off well, but really couldn't capitalize the starts. Then it was Hussain Talat, 30. He was the last hope. Nothing in the middle order. You expected a lot from Bangalzai, Shan and Haris. And they just managed to put 135, lost by 21 runs to ATF Southern Punjab. Oh, that's a superb bowling card. Ali Majid Shah started off well, took a wicket in the second spell. Samin Gul, I think, was the pick of the bowlers by the end. He bowled beautifully, those low full tosses working for them perfectly. Ilyas used for just 2 overs for 25 runs. Faisal Akram got 1, Imran Nandava got 1, but the man of the moment, the superhero for Southern Punjab is Salman Ali Agha himself, bowling 4 overs, 15 runs and getting 3 crucial wickets on those middle overs. Probably is the reason the Southern Punjab have won this game. Has been an impeccable match. That's how it all started. Balochistan, openers coming out. It wasn't a big task, looked like an easy transition. Hasibullah started off well, and shots coming in. For that moment we thought that they will cruise along. Looseness as well from the ATF Southern Punjab bowlers. For a moment it looked like an easy business. Asad Shafiq looked impeccable. So did Hasib. He played all shots he could. It was beautifully driven down the ground. Timing was perfect. Love making those balls into the fence. That was glorious from Hasibullah. Always delight to watch him. And then the fall started. First one to go, just trying to play it into the leg side. It looked like that he might anchor the innings. This was the leading edge taken. Salman Ali Agha made sure that he managed to keep that tight grasp afterwards. Bangalzai probably too ambitious on this occasion. It wasn't really necessary and a lot was dependent on him, but he probably threw away his wicket straight to the fielder Ilyas. Yeah, and in the end it was all Southern Punjab. There were a few boundaries here or there, but they kept things tight. Hussain Talat did try a few shots on the shorter ones, but this was the time when Haris Sohail hit a one and then played this poor shot. I think they've been Southern Punjab been helped by a few poor shots.
Ahmad Butt came a little late. It was probably too late for him. He had to go big. He had to go after every delivery, but lost his wicket too. And in the end, it was a little too much for the tail enders. Yasir Shah could not quite do much. It was a brilliant spell of bowling in the end by Samin Gul and Imran Mandawa, getting wickets and not giving away any run. Never look at that effort. When your fast bowlers are doing effort like this, you're in good spirit, your side is. And in the end, ADF Southern Punjab winning the game by 21 runs. ATF Southern Punjab, huge effort from them, and they'll get a lot of boost from this win. That has been the story. Balochistan struggled to chase it down. Southern Punjab putting 156. Haroon was a star with 57, and Mohammad Ilyas were a cameo. 41 just of 17. Yasir, always experienced, grabbing 3, and so did Akif, but it was way expensive. Ahmad managed to get 1. In reply, there was never momentum on Balochistan. Asad 43, Zain Talad with 30. But have a look at that. Salman with 3. Samin Gul, brilliant bowling in depth, managed to grab 2, and 1 from Imran Mandawa, winning by 21 runs. That's how the points table will pan out until ATF Southern Punjab grabbing those points. 2 games, 1 win. That will boost them up. They're on to the 4th position now. And this victory has made things very interesting on the points table. We'll take a break and we'll join you for the post-match presentation.